गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। सो वेलकम टू द प्रीलिम्स बूस्टर सेशन। आज का हमारा पहला टॉपिक है ह्यूमिडिटी। तो आपका ये ज्योग्राफी के लिए या फिर इन्वायरमेंट के लिए भी आप टॉपिक कह सकते हो। तो इस टॉपिक का में क्या है कि आईपीसीसी की रिपोर्ट जो है अभी रिसेंट आई है, जो असेसमेंट रिपोर्ट 6th, उसमें कहा गया है कि जब आप एक्सट्रीम हीट की बात कर रहे हो तो आपको ह्यूमिडिटी का भी जो है वो जो है मेजर करना पड़ेगा, क्योंकि ह्यूमिडिटी जो है वो फिजियोलॉजिकल स्ट्रेस जो है ह्यूमन बॉडी पर बहुत ज़्यादा डालती है। तो अब ये क्यों क्रिटिकल फैक्टर है, हीट एक्सपोजर के टाइम पर ह्यूमिडिटी को मेजर करना क्यों इम्पॉर्टेंट है? क्योंकि आपको पता होगा कि जब ह्यूमंस जो हैं वो बॉडी का टेम्परेचर कैसे मेंटेन करते हैं। जब बॉडी में बहुत गर्म गर्म हो जाती है बॉडी, तो वो स्वेट को प्रोड्यूस करती है। फिर स्वेट जब जो है इवेपोरेट होता है तो वो एक कूलिंग इफेक्ट देता है। उसी का ही यूज़ करते हुए हमारी ह्यूमन बॉडी जो है वो अपने बॉडी का स्टेबल टेम्परेचर मेंटेन करती है। लेकिन जब ह्यूमिडिटी बढ़ जाती है तो ये स्वेट जो है वो इवेपोरेट नहीं होता और हमारी बॉडी जो है वो अपना बॉडी टेम्परेचर को रेगुलेट नहीं कर पाती। उससे जो फिजियोलॉजिकल स्ट्रेस है वो और ज़्यादा बढ़ जाता है। तो इसीलिए कहा जाता है कि जो वेट बल्ब टेम्परेचर, जो आपका ह्यूमिडिटी वो मेजर करने के लिए यूज़ किया जाता है, अगर वो 35 डिग्री सेल्सियस से ऊपर का होगा तो वो बहुत मुश्किल हो जाता है हमारी ह्यूमन बॉडी के लिए। बहुत लंबे टाइम तक अगर ये टेम्परेचर ऐसा रहे 35 डिग्री सेल्सियस, जो वेट बल्ब टेम्परेचर है, ड्राई बल्ब टेम्परेचर नहीं, वेट बल्ब टेम्परेचर अगर मतलब ह्यूमिड टेम्परेचर अगर 35 डिग्री सेल्सियस से ऊपर रहे तो हमारी बॉडी के लिए बहुत डिफ़िकल्ट हो जाता है जो है बॉडी टेम्परेचर को रेगुलेट करना। तो वेट बल्ब टेम्परेचर और जो है ड्राई बल्ब टेम्परेचर में फ़र्क क्या होता है? तो ड्राई बल्ब टेम्परेचर तो आपका नॉर्मल टेम्परेचर होता है जो आप थर्मोमीटर से मेजर कर सकते हो कि हाँ 35 डिग्री सेल्सियस है। लेकिन ह्यूमिड आप जो है 35 डिग्री सेल्सियस और ड्राई 35 डिग्री सेल्सियस जो है उसमें बहुत फ़र्क होता है ना। तो जैसे कि अभी आपको पता होगा कि अभी 40 डिग्री से ऊपर चल रहा है टेम्परेचर हीट वेव के टाइम पर, बट इससे ज़्यादा कंसिडरेबल फिजियोलॉजिकल स्ट्रेस आपको तब मिलता है जब आपकी जुलाई या अगस्त का जब जो बारिश का मौसम होता है तब आपकी जो ह्यूमिड गर्मी होती है ना, तो वो होता है आपका वेट बल्ब टेम्परेचर। और अगर वो 35 डिग्री से सेल्सियस से ऊपर बहुत लंबे टाइम तक रहे तो आपकी जो है इवन वो फेटल भी हो सकता है, क्योंकि हम आपकी बॉडी जो है टेम्परेचर को रेगुलेट ही नहीं कर पाएगी और आपकी बॉडी में हीट अक्यूमुलेट होती रहेगी। ठीक है। सो इसीलिए कहा जाता है कि आप जब ये आईपीसीसी की रिपोर्ट कह रही है कि अब हमको वेट बल्ब टेम्परेचर्स को भी जो है वो कंसीडर करना पड़ेगा। सिर्फ आप जो नॉर्मल ड्राई बल्ब टेम्परेचर्स हैं उनको ही कंसिडरेशन में नहीं ला सकते हीट को मेजर करने के लिए। सो नेक्स्ट हमारा टॉपिक है स्टेट ऑफ वर्ल्ड्स बर्ड्स रिपोर्ट। तो ये आपकी बर्ड लाइफ इंटरनेशनल ने रिपोर्ट निकाली है। इसमें कहा है कि 48% जो बर्ड स्पीशीज़ हैं वर्ल्ड वाइड वो पॉपुलेशन डिक्लाइन जो है वो विटनेस कर रही हैं। इंडिया का आंकड़ा दिया उन्होंने कि 80% जो स्पीशीज़ है उनमें पॉपुलेशन का डिक्लाइन देखने को मिल रहा है और 50% के करीब जो है वो तो बहुत ही स्ट्रांगली जो है वो पॉपुलेशन उनका डिक्लाइन इंडिया में देखने को मिल रहा है। ठीक है। अब क्या रीज़न है इसके पीछे? ऑफ कोर्स ह्यूमंस का एक्सपेंडिंग फुटप्रिंट जो कि नेचुरल वर्ल्ड और क्लाइमेट चेंज को अफेक्ट कर रहा है, और हमारी जो ये नेचुरल हैबिटेट्स के डिग्रेडेशन जो है वो डायरेक्टली ओवर एक्सप्लॉइट कर रहा है हमारी बहुत सी बर्ड स्पीशीज़ को। ठीक है। तो बर्ड लाइफ इंटरनेशनल के बारे में देखते हैं। एक ग्लोबल पार्टनरशिप है कंजर्वेशन ऑर्गेनाइजेशंस की, जो कि बर्ड्स को और उनके स्पीशीज़ को और उनकी हैबिटेट को कंजर्व करने की बात करती है। इसका पहले नाम इंटरनेशनल कमेटी फॉर बर्ड प्रिजर्वेशन होता था। इसका ग्लोबल ऑफिस जो है वो कैम्ब्रिज में है, यूके में, और इसके 6 रीजनल ऑफिस भी हैं। ठीक है। एक क्वार्टरली मैगजीन वर्ल्ड बर्ड वॉच नाम से ये निकालते हैं, और ऑफिशियल रेड लिस्ट अथॉरिटी भी हैं ये बर्ड्स को लेकर IUCN के अंदर। ठीक है। सो नेक्स्ट टॉपिक हमारा है सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट। गवर्नेंस का टॉपिक है, लेकिन पॉलिटी का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। गवर्नेंस में भी इसको यूज़ कर सकते हैं, बट पॉलिटी में सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। तो अभी अब ये रिपोर्ट आई है एक ग्रुप की, जिसमें कहा गया है कि लगभग 800 ऐसे पाकिस्तानी हिंदूज़ हैं जो राजस्थान में सेटल थे और अब वो वापस जो है वो पाकिस्तान जा रहे हैं क्योंकि उनको सिटीजनशिप नहीं मिली है बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ठीक है। तो ये सिटीजनशिप उनको मिलनी कहाँ से थी? सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 2019 के थ्रू, क्योंकि इसी को ही लाया गया था ना। इनको जो हमारे पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान और जो आपके
बांग्लादेश के जो है माइनॉरिटीज़, जो वहाँ पे की माइनॉरिटीज़ हैं, उनको इंडिया में सिटीज़नशिप आसानी से मिल पाए, उसके लिए इस एक्ट को लाया गया था। लेकिन हुआ क्या है कि इसके अभी तक रूल्स ही फ्रेम नहीं किए गए हैं होम मिनिस्ट्री द्वारा। एक्ट तो पार्लियामेंट में पास हो गया, बट होम मिनिस्ट्री ने इसके अभी तक रूल्स फ्रेम नहीं किए हैं, तो ये इन्फोर्स नहीं हुआ है अभी तक। ये जो है इनफोर्स जो है वो अभी तक नहीं आया है। उसकी वजह से क्या हुआ है कि इनको, जो ये हमारे इमिग्रेंट्स हैं, इनको अभी तक ये सिटीज़नशिप नहीं मिल पाई है। तो सिटीज़नशिप का थोड़ा सा बैकग्राउंड देखते हैं। तो ऑफ कोर्स इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन सबको सिटीज़नशिप, जो है कंट्री के रेजिडेंट्स को सिटीज़नशिप गारंटी करता है, ओरिजिनली गारंटी करता था। फिर उसके बाद जो है सिटीज़नशिप एक्ट के अंदर जो है 1955 में जो है सिटीज़नशिप एक्ट लेकर आया गया। ऑफ कोर्स पहले सिर्फ कॉन्स्टिट्यूशन से जो है वो सिटीज़नशिप का क्राइटेरिया आ रहा था। फिर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने सिटीज़नशिप एक्ट ही पास कर दिया 1955 में, और कहा कि जो अनडिवाइडेड इंडिया के सिटीजन्स हैं, उनको रजिस्ट्रेशन के थ्रू जो है सिटीज़नशिप मिल सकती है। और जो अदर कंट्रीज़ से इंडिया में आ रहे हैं, और वो फिर मतलब वही वो क्राइटेरिया 11 साल का है, जब वो पूरा करते हैं तो उनको नेचुरलाइजेशन से सिटीज़नशिप मिलती है। फिर 1986 में एक अमेंडमेंट किया गया सिटीज़नशिप एक्ट के अंदर, क्योंकि उस टाइम पर बहुत ज़्यादा इलीगल माइग्रेशन आ रहा था बांग्लादेश से। तो उसमें कहा गया कि जो 1 जुलाई 1987 से पहले इंडिया में बॉर्न हुए हैं, और उन या फिर वो एक इंडियन मदर या इंडियन फादर को बॉर्न हुए हैं, उनको ही इंडियन सिटीजनशिप मिलेगी। ठीक है। फिर 2003 में एक और अमेंडमेंट की गई सिटीजनशिप एक्ट के अंदर, जिसके अंदर इलीगल माइग्रेंट को भी डिफ़ाइन किया गया। उनको कहा गया कि जो चिल्ड्रन बॉर्न हैं किसी इलीगल माइग्रेंट को, तो उनको जो है वो सिटीजनशिप नहीं मिलेगी। ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया का कंसेप्ट भी लाया गया। फिर कहा गया, मैंडेट किया गया कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो है वो एनआरसी लेकर आएगी, नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन, जो कि आपका आसाम में आना था। ठीक है। सो ऑफ कोर्स ये भी जो है अभी तक इसके भी रूल्स फ्रेम नहीं हुए हैं कुछ नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन्स के। ये एक्सरसाइज चल तो रही है, ऑफ कोर्स आपको पता ही है आसाम के अंदर, बट इसका जो अभी तक कितने लोगों को सिटीजनशिप जो है उनकी गई है, या कितने लोगों की को डिपोर्ट करने का कुछ प्लान है, ये कुछ क्लियर नहीं है इसके बारे में अभी तक। ठीक है। सो हमको देखना है कि सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट क्या है 2019 का। तो सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट के अंदर जो इलीगल इमिग्रेंट्स, जो कि आपके पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान और बांग्लादेश से आए, और जो वहाँ की माइनॉरिटीज़ हैं, जो वहाँ पे हिंदू हैं, सिख हैं, पारसी हैं, जैन हैं, बुद्धिस्ट हैं या क्रिश्चियन इमिग्रेंट्स हैं, उनको जो है सिटीजनशिप देने के लिए फास्ट ट्रैक सिटीजनशिप 11 साल के प्रोविज़न की बजाय 5 साल के अंदर सिटीजनशिप देने के लिए ये अमेंडमेंट एक्ट लाया गया था। ठीक है। फिर इसके अंदर जो है ओवरसीज सिटीज़न ऑफ इंडिया का रजिस्ट्रेशन जो है वो भी जो है उसको कैंसिल किया गया, और उनको सिटीजनशिप देने की बात की गई। ठीक है। लेकिन इसको ऑफ कोर्स जो है चैलेंज भी किया गया कोर्ट में, लेकिन अभी तक जो है ये इसका खिलाफ कोई जजमेंट नहीं आया है। अब एलिजिबिलिटी क्या है सिटीजनशिप लेने की इस एक्ट के अंदर, अमेंडमेंट एक्ट के अंदर। तो इसमें कहा गया है कि जो लोग अपनी कंट्री से जो है वो निकाले गए हैं, जो पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफ़गानिस्तान से, वहाँ की माइनॉरिटीज़, जो आपको पता ही है ऊपर जो कम्युनिटीज़ मेंशन की गई हैं, उनको वहाँ से इसलिए निकाला गया क्योंकि बिकॉज ऑफ देयर रिलीजन। तो उनको यहाँ पर इंडिया में वो शेल्टर सीक कर रहे हैं, उनके लिए ये एक्ट बनाया गया है। कट ऑफ डेट क्या रखी गई है कि तो 31 दिसंबर 2014, उससे पहले इंडिया में एंटर हुए थे, या उस दिन या उस दिन से पहले इंडिया में एंटर हुए थे, वो एलिजिबल हैं इसके लिए। फिर कहा है कि जो ये एक्ट के प्रोविजंस हैं, ये कॉन्स्टिट्यूशन का जो 6th शेड्यूल एरियाज़ हैं, जो ट्राइबल डोमिनेटेड एरियाज़ हैं, वहाँ पर ये अप्लाई नहीं होंगे। फिर वो वाली स्टेट्स जहाँ पर इनर लाइन परमिट रेजीम अभी भी चल रहा है, जैसे अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड और मिज़ोरम, वहाँ पर भी जो इस एक्ट के प्रोविजंस हैं वो लागू नहीं होंगे। ठीक है। तो ये एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। सो नेक्स्ट हमारा टॉपिक है मंकी पॉक्स। आपका सोशल इश्यूज़ में भी आ सकता है, ये साइंस एंड टेक के इशू में भी आ सकता है। तो हेल्थ अथॉरिटीज़ जो यूके की है, उन्होंने एक केस पाया है मंकी पॉक्स का, क्योंकि एक पर्सन जो है वो रिसेंटली नाइजीरिया में ट्रैवल किया था, वो अपने साथ ये मंकी पॉक्स लेकर आया। ठीक है। तो मंकी पॉक्स वायरस एक ऑर्थोपॉक्स वायरस है, जो कि आपका सेम वेरियोला वायरस की तरह ही फैमिली को ही बिलोंग करता है, जिससे आपका स्मॉल पॉक्स होता है। ठीक है। इसके जो मंकी पॉक्स के जो सिम्टम्स हैं वो लगभग स्मॉल पॉक्स जैसे ही होते हैं, लेकिन ऑफ कोर्स थोड़े से सिवियर कम होते हैं। कहाँ पर ज़्यादा पाया जाता है ये? ऑफ कोर्स आपका जो सेंट्रल और वेस्ट अफ्रीका का रीजन है, वहाँ पर ये ज़्यादा पाया जाता है, और ये एक जूनोसिस डिसीज़ है, जूनोटिक डिसीज़ है, मतलब आपके इन्फेक्टेड एनिमल्स से ये ह्यूमंस में ट्रांसफ़र होती है।
खासकर जो आपका ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट वाला एरिया है वहाँ पर ये आपके एनिमल्स में ये वायरस पाया जाता है। और इसको इवन आपके स्क्विरल्स, रैट्स, वहाँ के डॉर्मीस और कुछ स्पीशीज़ ऑफ मंकीज़ में इसको देखा गया है। ह्यूमन टू ह्यूमन ट्रांसमिशन बहुत ही कम होता है, लेकिन होता कैसे है, अगर होता भी है तो आपके बॉडीली फ्लूइड्स एक्सचेंज होने की वजह से हो सकता है, या फिर आपके रेस्पिरेटरी ड्रॉपलेट्स या कंटेमिनेटेड ऑब्जेक्ट्स की वजह से ये वायरस एक्सचेंज ह्यूमन से ह्यूमन में हो सकता है। ठीक है, सो नेक्स्ट हमारा टॉपिक है फॉरेक्स। तो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स, ये आपका इकोनॉमी का टॉपिक है ऑफ कोर्स। तो आपका जो है सितंबर 2021 में इंडिया का जो फॉरेक्स है वो आज तक के रिकॉर्ड हाई लेवल पर पहुंच गया था, लेकिन अब वो गिरकर $600 बिलियन के जो मार्क से नीचे चला गया, बिकॉज जो आपका डॉलर है वो स्ट्रेंथन होना शुरू हो गया। तो अब फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स का डिक्लाइन देखने को मिल रहा है। अगर हम अप्रैल 29 की फिगर देखें 2022 की, तो आपका जो है फिगर वो $597.72 पे पहुंच चुकी है। तो ऑफ कोर्स डरने की ज़रूरत तो नहीं है, क्योंकि बहुत कंसिडरेबल डिक्लाइन नहीं है। दिस इज़ जो है एक्सपेक्टेड, क्योंकि हमारा डॉलर स्ट्रेंथन हो रहा है। कहा तो ये भी जा रहा है कि ऑफ कोर्स गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जानबूझकर भी करेंसी को डेप्रिशिएट करती है, सो दैट आपके एक्सपोर्ट्स जो है वो प्रमोट हो सके। ठीक है, हम एक्सपोर्ट्स को प्रमोशन करना चाहते हैं। तो अगर आपकी जो है डॉलर स्ट्रेंथन हो जाएगा, आपकी रुपी जब सस्ता हो जाएगा, तो उससे क्या होगा कि आपके एक्सपोर्ट्स को हेल्प हो जाता है। तो कंट्री में जब अगर कभी भी इकोनॉमिक कोई इशू होता है, इकोनॉमिक क्राइसिस जैसी सिचुएशन होती है, और तो उसको सपोर्ट करने के लिए हमारी को करेंसी को थोड़ा सा डीवैल्यूएट करना पड़ता है। अगर करेंसी अप्रिशिएट हो जाए, हमारा रुपी स्ट्रेंथन हो जाए, तो हमारे उससे एक्सपोर्ट्स गिरने लगते हैं। ठीक है, सो पहली बात तो हमको ये पता होना चाहिए कि फॉरेक्स रिजर्व्स होते क्या हैं या फॉरेक्स क्या होते हैं। तो आपके एक्सटर्नल एसेट्स जो कि गोल्ड की फॉर्म में या स्पेशल ड्राइंग राइट्स की फॉर्म में या फिर फॉरेन करेंसी एसेट्स की फॉर्म में इंडिया के पास जो होते हैं, जो कि जिसको कंट्रोल कौन करता है, आपका आरबीआई। ठीक है, तो कौन कौन से कंपोनेंट्स होते हैं फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स में? आपके फॉरेन करेंसी एसेट्स, गोल्ड, स्पेशल ड्राइंग राइट्स जो कि आपकी करेंसी है आईएमएफ की, और आरटीपी जो आप कैपिटल आप आईएमएफ में रखते हो, रिजर्व ट्रांस पोजीशन, उसको हम जो है इन सब को मिलाकर हम जो है फॉरेक्स रिजर्व्स मानते हैं। तो डिक्लाइन क्यों हो रहा है? ऑफ कोर्स आपके फॉरेन करेंसी एसेट्स के अंदर जो है वो फॉल देखने को मिल रहा है। आरबीआई जो है वो फॉरेन करेंसी एसेट्स को बेच रहा है, ताकि जो है डॉलर जो है वो आपका स्ट्रेंथन हो सके और हमारा रुपी जो है वो डेप्रिशिएट हो सके, जिसकी वजह से हमारे एक्सपोर्ट्स बढ़ सके। ठीक है, फिर जो है और भी रीज़न है, आपका जो यूएस का फेडरल रिजर्व है, उन्होंने मॉनेटरी पॉलिसी टाइटनिंग शुरू की है और इंटरेस्ट रेट हाइक कर दिए हैं। उसकी वजह से जो इन्वेस्टर्स है वहाँ पर उनको फ़ायदा मिल रहा है, तो इसलिए वो यहाँ इंडिया से जो है वो फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट जो है वो आउटफ्लो कर रहे हैं, मतलब यहाँ से निकाल रहे हैं पैसा। ठीक है, सो अब अगर बढ़ेगा फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स, तो इंडिया को क्या फ़ायदा होता है? ऑफ कोर्स आपका जो है कंफर्टेबल एक एक्सटर्नल बैलेंस आ जाता है आपके पास। फिर आपके पास इंपोर्ट बिल कवर करने के लिए कंट्री का जो है वो एक कंफर्टेबल रिजर्व मिल जाता है आपको। आपका जो है रुपी स्ट्रेंथन हो जाता है डॉलर के अगेंस्ट। नॉर्मल टाइम पर आपका रुपी अगर स्ट्रेंथन होगा डॉलर के अगेंस्ट, तो आपके लिए सही रहता है। लेकिन कई बार आपको जब इकोनॉमिक सिचुएशन ठीक नहीं है, तो आपको रुपी को डेप्रिशिएट भी करना पड़ सकता है, ताकि आप अपने एक्सपोर्ट को बढ़ा सको। ठीक है, फिर कॉन्फिडेंस मिलता है मार्केट्स में कि यस, इस कंट्री के पास इतना फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व है कि ये कभी डिफ़ॉल्ट नहीं करेगा। ठीक है, तो आपके जो एक्सटर्नल डेट ऑब्लिगेशंस हैं उनको पूरा करने के लिए भी आपके पास पैसा पड़ा होता है, और इवन आपके नेशनल डिज़ास्टर्स या फिर इमरजेंसीज़ के लिए भी आपके पास कंफर्टेबल अमाउंट ऑफ मनी पड़ी रहती है उसको कवर करने के लिए। ठीक है, सो ये इसके फ़ायदे हैं फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स के। सो नाउ लेट अस सी ऑल दीज टॉपिक्स इन इंग्लिश. So the first topic is humidity. So recently, of course, this topic is for your geography or most probably in your environment section. So this IPCC report, sixth assessment report of IPCC is saying that when you are estimating the extreme heat effect on human body, you cannot ignore the impact of humidity on the physiological stress that it gives to the human body. Okay, so why humidity is considered as such a critical factor while measuring heat exposure? Because you know the procedure, how the body regulates our temperature. When humans have the human body loses excess heat by generating sweat.
so that when that sweat gets evaporated, it gives a cooling effect to the body, and that's how the human body uh, stabilizes its body temperature. Okay, but when humidity is in excess, then the sweat does not evaporate, and when the sweat is not evaporating, then it is not generating a cooling effect, and that thereby it is not the body is not able to maintain its temperature. Okay, so wet bulb temperature is basically humid temperatures or humid heat, and if it goes in excess of 35 degrees Celsius over land, then it becomes very difficult for the body to maintain to stabilize the body temperature. So what is the difference between dry bulb temperature and wet bulb temperature? So dry bulb temperature is the normal temperature that you can measure through the thermometer. So you know that currently we have this 40 degrees Celsius, above 40 degrees Celsius heat wave in the northern India, of course, and even in central India. But this is still, if you are sitting in, let's say, in your home, then it is not affecting you as much as this as let's say 35 degrees Celsius of humid heat would affect you. Okay, so that's what the difference between dry bulb temperature and wet bulb temperature is. Humid heat is extremely difficult to endure for a human body, because our body fails to regulate the temperature in excess of, let's say, according to this of course document, above 35 degrees Celsius. So if your body has sustained exposure to above 35 degrees Celsius of wet bulb temperatures, then it could also become fatal for you. So that is what IPCC report is saying, that we have to start measuring wet bulb temperatures also, because they are also increasing, and they are putting considerable physiological stress over the human body. Okay. So the next topic is State of World's Birds Report. So this is of course a topic for your environment section, and this report has been released by BirdLife International, and this report is saying that 48% of bird species worldwide are undergoing population decline, and in India only 80% of species are declining in numbers, and about 50% are plummeting strongly. So that's a big cause of concern for India and the rest of the world also. And what is the reason behind this decline? Of course, human footprint is expanding, and it is causing climate change, and the natural world is facing considerable stress from this expanded human footprint. And of course, all of this is leading to degradation of natural habitats of the birds, and this is leading to direct overexploitation of many bird species. So that is what the that is how this the population is declining of birds. Okay, so what is BirdLife International? Of course, it's a global partnership of conservation organizations who want to conserve birds and their habitats. It was, of course, earlier known as International Committee for Bird Preservation, and its global office is located in Cambridge, that is in UK. It also has 6 regional offices, and it releases or publishes a quarterly magazine named as World Bird Watch. It is also the official red list authority for birds at the IUCN. So the next topic is Citizenship Amendment Act. So this topic is for your polity section. It can also be used for your governance section in a certain way. Okay. So of course this news is there that over 800 Pakistani Hindus who were residing in Rajasthan, uh, expecting them to be received to receive the citizenship of India, but now they have given them up their hope, and they are returning back to Pakistan, and they have already returned to Pakistan rather in 2021. So what this means is that Citizenship Amendment Act that we brought in 2019, it has failed to bring trust in the targeted people, because we have not yet even formulated the rules for it. The government is saying, rather the Home Minister recently said that as soon as the coronavirus pandemic would end, the government of India would formulate rules, and this Citizenship Amendment Act would come into force. But let's see what is the background of citizenship in India. Of course, the Constitution of India guaranteed citizenship to all of the country's residents at the time of Constitution was made,
and it was making no distinction on the basis of religion. But in 1955, the Citizenship Amendment Act was passed, and it said that two means to acquire Indian citizenship are there for foreigners. First, the people who are from undivided India, they were given citizenship through registration, and those who are from other countries, let's say US, UK, or any other country, they were to be given citizenship through naturalization through that 11-year process. So, but in 1986, there was an urgency because there was a problem of illegal migration from Bangladesh. To curb that migration, illegal migration, Government of India brought a amendment to the Citizenship Act of 1955, and we brought the concept that people who were born prior to 1st July 1987 to either a mother or a father of an Indian citizen would be considered as an Indian citizen. So this was of course done to curb illegal migration from Bangladesh. It was mostly concentrated in Assam. And in 2003, we also made another amendment to this Citizenship Act. So we brought this notion of illegal migrant who could either be jailed or deported. Okay, so it made illegal immigrants ineligible for citizenship by either registration or by naturalization. It also disallowed the citizenship by birth for the children who were born to these illegal immigrants. It also brought the notion of overseas citizen of India to of other for others for citizens of other countries who are of Indian origin, and it also mandated that the government of India would construct and maintain a national register of citizens. Okay, so this was not just confined for Assam, but for the entire country. So in future, if the government of India brings this NRC at the national level, this the origins of that of that NRC would be taken from the Citizenship Amendment Act of 2003. Okay, so now what is this Citizenship Amendment Act of 2019? Of course, this act aimed to amend the definition of illegal immigrants that we brought in the 2003 Act for certain communities, for certain minorities who were belonging to Pakistan, Afghanistan, and Bangladesh. So, of course, the aim was to fast track Indian citizenship for these illegal immigrants to 5 years, because earlier they have this provision of 11 years for naturalization, and it also cancelled the overseas citizenship of India registration. Okay, and what is the eligibility criteria for the people who are eligible for gaining citizenship according to this act? People who were forced to or compelled to seek shelter in India due to persecution on the ground of religion in these targeted countries, they are eligible to apply. The cutoff date that has been earmarked for getting citizenship in India is 31st December 2014, and of course, people who came to India before this period are eligible for the citizenship. This will, of course, there are certain exceptions also. These provisions would not apply to areas which are covered under the Constitution's sixth schedule, and these provisions would also not apply to states which have inner line permit, like your Arunachal Pradesh, Nagaland, and Mizoram. Okay. So the next topic is monkeypox. So it's a social issue, or it can also be considered as a science and technology section issue. And what is this topic? So health authorities in UK have confirmed a case of monkeypox from an individual who had a travel history to Nigeria recently. Okay, so it's a form of orthopox virus, and it belongs to a family of viruses which also causes smallpox. So the symptoms are similar to smallpox, but they are less severe. Okay, so where is it more prevalent? Of course, in the West African and Central African area, this virus is more prevalent, and it's a zoonotic disease. It is a zoonotic disease, and it transmits from the infected animals to humans. Okay, so the cases generally occur to close to tropical rainforest areas of these regions, and this virus has also been detected in squirrels, rats, and some other species of monkeys. Human to human transmission is limited, but it can happen in with bodily fluids exchange, and it can also happen with exchange of respiratory droplets and contaminated objects.
So the next topic is forex, that is the foreign exchange reserves. So India's foreign exchange reserves are plummeting. So it reached the 642.45 billion mark in September 2021, but now the reserves are falling to below the $600 billion mark because the uh, dollar is strengthening. Okay, so of course on 29th of April we had this 597.72 billion of foreign exchange reserves with us, and it is declining because of several reasons. But before that, we have to see what are forex reserves. So these are basically the external assets that a country like India holds in the form of gold, special drawing rights, and even foreign currency assets. So these are of course accumulated by India, but they are controlled by the RBI. Okay. So what are the components of forex reserves? Of course, the foreign currency assets. It can be in the form of US dollar, euros, British pound sterling, uh, Australian dollar, or Japanese yen. Okay, it can also be in the form of gold. It can also be in the form of SDR, that is the currency of IMF, or the RTP, that is the reserve capital that India has with IMF. Okay, so what is the reason of the decline? Of course, a fall in foreign currency assets is one of the major reasons of this decline. Of course, what is happening is that RBI is selling foreign currency assets to some say that it is being done deliberately so that the rupee devaluates and the exporters the exports from India increase. Okay, so this is done by RBI occasionally to strengthen exports from India, especially in times of economic stress in India, and when there is a manufacturing supply is more, and we want and the demand in India is not as much as the supply, so we want to export the surplus. So that's why we go for devaluation of our currency. Okay, but there is also another reason. The US Federal Reserve is tightening its monetary policy, and it is it is giving interest rate hikes. So the foreign portfolio investors are rather moving back towards their own country, and that's why FPI is outflowing. So that is also one of the reason. But why forex reserves are important for India? High forex, how the rise in forex reserves help to India. So it gives a comfortable legroom for both the government of India and RBI to manage India's external and internal financial issues. So it would also if of course if we compare it with the 642 billion figure, it was enough to cover the import bill of the country for a year. It also strengthens the rupee against the dollar in normal times. Okay, it is important to have a strengthened rupee in normal times, but in some certain times when you want to increase your exports, you have to go for managed devaluation of your currency. Okay, it also provides a certain level of confidence to the investors that the current country would be able to meet its external debt obligations. So of course that also gives confidence to the sovereign credit rating agencies, and that's how the forex reserves help India in having a uh, having enough leg room to manage its foreign exchange needs and external debt obligations. It also provides um, a reserve for India to manage national disasters or certain exigencies or emergencies. Okay, so that's how high foreign exchange reserves help India in the times of crisis. So these were our topics for today. We'll meet next time with new topics. Until then, goodbye and take care.